Hello, everybody. Okay, drop a hi if you're here with me. Okay, till you join the live, let me share my screen with you and I can see an answer here. चलो ठीक है, अभी आंसर को शेयर वो करते हैं, डिस्कस करते हैं. Drop a hi so that I know you're here with me. आज मैंने 1 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया है. All right, okay. चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं. आई सी योर आंसर और इसको देखते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है. तो यू चेक योर आंसर, चेक योर स्टेप्स दैट हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, अभी ये देखना है कि कैसे इसको करना है. Reading the question is very important. Okay, because there are many terms involved in this. Subtract, sum, so many, and this, that, so many things. So ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या बात हो रही है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला वर्ड आता है सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट, यू नो, दो सब्ट्रैक्ट है, करना है, साइन है, एक माइनस का साइन होगा. ठीक है, मैं यहाँ माइनस का साइन डाल रही हूँ. नाउ व्हाट आर यू सपोज टू सब्ट्रैक्ट? नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ सम होता है एडिशन. एडिशन होगा, ऑब्वियसली इट मीन्स यू नीड टू एक्सप्रेशंस टू ऐड. Sum of this and this, let me call it 1. So subtract the sum of this from, I hope you remember the word from. From में क्या होता है? You change the order. From the sum of this and this, let me call it 2. So should I do 1 minus 2 or 2 minus 1? Remember, when you have the word from, तो from के बाद जो term आती है, that will be your first expression. Okay, and then 2 minus 1 we will do in this case. From के बाद वाला जो phrase होता है वो आपका पहले आता है, and then the one which is before, like from, वो जो होता है, that is your number to be subtracted or expression to be subtracted. तो अब इसको लिखते हैं. मैं पूरा एक ही सीक्वेंस में लिख रही हूँ. You can solve them separately, like you solve for 2 first and then you solve for this and then you subtract ultimately. But I prefer like solving, writing it all together. It saves some time. Again, it all depends on your comfort level. How comfortable are you solving this way? Okay, then minus karna hai. Minus, now I'm putting a big bracket here because there are two things here. 13x minus 4y plus 7z. Okay, plus, I'm writing the second bracket down here, minus 6z plus 6x plus 3y. All right, और ये ब्रैकेट क्लोज करनी है. चलो थोड़ा सा इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स ओपन दिस अप, ओपन दिस ब्रैकेट. ये तुम्हारा फर्स्ट था. ठीक है, लेट मी चेंज द इंक हियर टू शो यू दैट ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये सेकेंड ब्रैकेट है. ये तुम्हारा सेकेंड है and this is your first. Okay, 2 minus 1. Now let's begin. तो अभी फर्स्ट ब्रैकेट में सॉल्व कर रही हूँ. इसका पहले पूरा सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. It's plus here, so no need to change the sign. You can directly write it. This is 7z minus 7z. Oh, sorry, this is not z, it is just 7. I'll remove it then. Okay, bracket closed. Then minus, abhi we will open the bracket
the small brackets. ध्यान से लिखना है साइन, ओके? And then solve this bracket first. So it will be 6x plus 2x makes 8x, negative 4y plus 4y. I believe we can cancel them because they are different signs. And then we are left with negative 7z minus 7. I think there should have been a z with 7, but it's not there, let it be. Okay, so this is the first one. Now minus, अब यहाँ पे देखो बहुत कुछ हो रहा है, उसको भी देखना है, बट सेम थिंग 13x and plus 6x will give you how much? 19x. Now let's have a look at y. Negative 4y and positive 3y. It will be negative y and the last is z. अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये है +7 and this is plus into minus will become -6. So it will be plus z. Then we'll solve it further. अब यहाँ पर ये माइनस साइन है, so we will change all the signs inside. उसको ध्यान देना है. -7, then minus 19x. It will become plus y minus z. So it will be negative 11x. We do not have a y. See, I'll just highlight whatever I'm solving. This I have solved. Let me write down the z. So negative 4, negative 1 is equal to negative 5z. Now I'm left with negative 7 and plus y. This is what I got. I know it's very long, but you have to go step by step. Okay? If you find that solving everything all together is too much, बच्चा, then you can break it down. क्या करना होगा पहले? एक बार में एक चीज सॉल्व करनी है. मैं इसको मार्क कर देती हूँ, कलर दिखा के डिफरेंट उसमें. जैसे इस ब्रैकेट को अलग से सॉल्व करो, फिर इस ब्रैकेट को अलग से सॉल्व करो. अल्टीमेटली जब ये दोनों तुम्हारे पास रहेंगे, देन यू सब्ट्रैक्ट इट. Okay, I think some part of it you got correct, isn't it? I think you got negative 11x also. है ना बच्चे? 11x you had, then negative y you have 5, negative 5z is correct, negative 7 is correct. That's good. But then there were problem with the sign of 11x and y. So check that, okay, where you went wrong. All right. Otherwise, rest of it you did really well. I mean, it was a tough question. You have done really well. Good job. बहुत अच्छे से किया बच्चा. चलो, show me a thumbs up if you are following. Okay. तो फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. गुड. ठीक है, अभी थोड़ा सा इजी ले लेती हूँ, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हूँ. चलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन. वी विल रिकॉल व्हाट वी हैड डन लास्ट टाइम. सो सपोज इफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम, नाउ सब्ट्रैक्ट this from 0. How will you write? अब इसको कैसे करेंगे? चलो, I'll give you a few seconds to start and then I'll catch up. All right, I believe you must have started. Again, the same thing when it comes to from. Whenever a word, that word from is given, remember that what comes after from, that is your number 2. This is number 1. We will do 2 minus 1. So it will be 0 minus x square minus 3x minus 4xy.
You do not need to write zero. Zero नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चे, zero नहीं लिखते हैं. तो फिर अब क्या करेंगे? जीरो नहीं लिखना है तो फिर यू जस्ट लीव दैट स्पेस, और माइनस साइन आउटसाइड है. तो रिमेंबर दैट इफ देयर इज नथिंग विद माइनस साइन वी अज्यूम इट टू बी 1 एंड देन वी मल्टीप्लाई this with this, then negative 1 with this, then negative 1 with again the last term along with the sign, signs के साथ. Negative 1 times x square, positive x square. Again the rule of multiplication, same signs you get a positive, different sign of multiplication you get negative. Okay, same friends बन जाते हैं, ऐसे समझ लो. multiplication में सिर्फ addition का different होता है. Okay, so here we are doing multiplication. So minus into plus is minus. 1 into x square will give you 1 square, x square. Minus into minus is plus. 1 into 3 is 3 and x. Now minus 1 into minus is plus. 1 into the rest you will get 4xy. So this is your answer. All the signs inside will change. अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन बोलते हैं कि मैम ये जो है इसमें मतलब इसमें हमने माइनस क्यों कर दिया? तो यहाँ पर देखना कि ये जो एक्स स्क्वायर होता है ना बच्चा, देयर इज नो साइन, दिस ऑल्सो हैज अ प्लस साइन. ओके, बिकॉज यूजुअली हम ब्रैकेट के इमीडिएटली लिखना स्टार्ट कर देते हैं. डजंट मीन दैट इट डजंट हैव अ साइन या फिर इसका साइन माइनस है. इसका साइन, बिकॉज इट इज इनसाइड द ब्रैकेट, इट्स साइन इज पॉजिटिव. Minus is outside the bracket. Okay, so you have to multiply the two signs. Still you have to multiply the two signs. Good, good. You got it correct. Good. Perfect. Well done. Chalo. Next question. So this was quite little easy. After that previous question which tested all your understanding. So this is a question. Now ये थोड़ा सा tricky questions है which I thought I'll share with you. Okay. अब ये question कैसे करोगे? कुछ ideas दो मुझे. Write something on the chat. I'm not asking about your answer, okay? Suppose if I call this expression as 1 and this expression as 2, something that you think we should do with these? We'll do 2 minus 2 to 1. Okay, let's see. अच्छा, ये जो question होता है ना, इसमें थोड़ा सा suppose if you get confused, then go with the word. What must be added? What? So let me call it x. I'm just एक थोड़ा सा ले लिया मैंने, या फिर एक blank. What should I add? What like let me add x. What should be added to 1 to get number 2 right here? So let me assume 1 into as some numbers. So let me say, what should I add in 10 to get 18? Okay, मैं words पे जा रही हूँ, ठीक है? I know that I have to do 1 plus something makes 2. So मैं in 1 and 2 को ना number से replace कर देती हूँ. What should I add in 10 to get 18? So कैसे आएगा? How can I find? I'm sure you must have found. How much is x? X is 8, right? But how will you get this 8 from 10 and 18? What should we do? We should do, as you have written, we should do subtraction. 18 minus 10, that is 18 was number 2. So second expression minus the first expression. So this is how you can think and solve. All right. So do not get confused. If there are long expressions, just go with the words and assume some small numbers to solve with. Okay. Then you'll find it easy. तो चलो इसको solve करते हैं. 2 minus 1 करेंगे. I'm sure you must have started. Let me also catch up with you. Right. Okay. So we are doing 3p minus 2q plus 6. And then we will subtract the first expression from this. Okay. Now, remember that there is a minus sign before the bracket. So, as we say, like it's a math hack, you can say that all the signs
of the terms inside will change. Mathematically, if we use the concept, remember that we multiply the sign with all the signs inside, or we can say that there is an invisible 1, so that negative 1 will be multiplied with all the terms inside. So let's begin. We will do 3p. The first expression remains as it is. Now we will start multiplying. Negative 1 times positive 2p. So it will be minus 1 times 2 is 2p. And that minus into minus will get plus 8q, because multiplication with 1 will give you the same term. Similarly, the last one will be negative 11 equal to, combine the like terms. So 3p, negative 2p. So we will get positive 1p. Now, do I need to write a 1 there? No, because 1 times p or 1 times any variable or a number will give you the same variable. So we will write it just as p. Now the second one, q. Let's take q. So negative 2q plus 8q will give you 6, positive 6q. Okay, same sign add, different sign subtract. We will subtract the numbers and write the sign of the bigger absolute value. Then is the last one. We are left with positive 6 and negative 11. When you'll subtract them, you will get negative 5. Okay, sign of the bigger absolute value, which is 11. So negative 5. So the answer is p plus 6q minus 5. Did you also get the same answer? Give me a thumbs up if yes. Any point, you can always write it in the chat and let me know if you want to want me to clarify something. How did you get a negative 6? Piku, listen. Bacha, signs no, you have this negative 2 plus 6. अभी कैसे करना है? Remember this rule, okay, that I'm teaching you. ये है कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग द टू इंटीजर्स. कंबाइनिंग ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है? रिमेंबर, ये छोटी सी राइम लिख लो. सेम साइन एड, ठीक है, इसको लिखो, राइट इट डाउन. सेम साइन एड, डिफरेंट साइन subtract. Okay, sign of the bigger number, and you will repeat it with me. Sign of the bigger number, that's how it's exact. That's how it's exact. ठीक है, ये शॉर्टकट है इसको लर्न करने का. अभी देखो क्या हो रहा है. अभी क्या है? सेम साइन ऐड. आर दे सेम साइन नंबर्स? क्या इनका साइन सेम है? नेगेटिव 2 है, ये पॉजिटिव 6 है. साइन तो सेम नहीं है, डिफरेंट साइन है. सब्ट्रैक्ट करोगे. सॉरी, ये 8 था ना, यहाँ पर 8 है. ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आएगा? 6 आएगा. अभी थर्ड रो पे चलो. साइन ऑफ द बिगर नंबर, विच नंबर इज बिग, 2 और 8? आई एम सेइंग बिगर नंबर मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू. 2 ज्यादा है या 8 ज्यादा है? कौन सा वैल्यू ज्यादा है? Obviously 8 is more, so we will put the sign of bigger number, which is plus 6. Okay, so it is plus 6, not minus 6. और यहां पर अगर ऊपर गलती किया था तो रिमेंबर, देखो ये माइनस है और ये माइनस है. मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होते हैं? सेम साइन बन जाते हैं प्लस. ये तुम इससे भी कनेक्ट कर सकते हो. सेम साइन ऐड कर दो, मतलब ऐड मीन्स प्लस का साइन. ओके, और डिफरेंट साइन माइनस का साइन. सेम साइन में प्लस प्लस भी आ जाते हैं और डिफरेंट साइन में ये आ जाता है. तो इससे भी कनेक्ट कर सकते हो, ये जो है मल्टीप्लिकेशन से भी. ऑलराइट, सो ऐसे करना है इसको, रूल को ऐसे देखना है. और अगर थोड़ा सा अगर यू वांट टू गो कॉन्सेप्चुअली, तो क्या होता है इसमें, देखो कि नेगेटिव 2 मतलब क्या हो गया? अगर तुम्हारे पास ना रेड, सपोज ब्लू कॉइन्स है, 2 ब्लू कॉइन है, नेगेटिव ब्लू हम मान लेते हैं और पॉजिटिव को ग्रीन मान लेते हैं. तो हमारे पास ग्रीन कितने हैं? 8 है. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे आपस में. कितने बचे?
ग्रीन के बचे हैं ना, ग्रीन है पॉजिटिव। तो फिर ये कितने ग्रीन है, 6 है ना, तो 6 ग्रीन आए, ग्रीन क्या था, पॉजिटिव, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इंटीजर्स को ध्यान से करना है, इंटीजर्स में गलती नहीं करनी है बच्चा। ओके, मे बी आई वुड क्रिएट समथिंग फॉर इंटीजर्स। चलो ठीक है, अभी उसके बाद ये क्वेश्चन है, अभी इसमें सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस व्हाट मस्ट बी, पहले इसका अभी आप कैसे लिखोगे, ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे वो देखना पड़ेगा। What must be subtracted from this to get that? What must be? What? Let's call it x. Let x be subtracted from this to get this. अब इसकी कैसे लिखेंगे, इसको मैं नंबर 1 बोल देती हूँ, 2 बोल देती हूँ, 1 कहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो यानी कि यहां से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो देखो 1 माइनस एक्स, मतलब 1 से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हाट विल यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 टू गेट द सेकेंड, सी टू गेट मीन्स द आंसर इज दिस, आफ्टर इक्वल टू साइन यू विल गेट दिस नंबर। अभी इसको let's translate this in mathematical language, again we have done it but with some numbers, कुछ numerals के साथ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो गलती की है, 2 - 1 नहीं होगा, क्यों, देखो अभी मैं क्वेश्चन को वैसे ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि सेकेंड आ जाएगा, या मैं बोलूँ कि 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 8 आ जाएगा, बताओ कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 8 आ जाएगा। डज इट फील इजी, व्हाट्स द आंसर, 2 आ जाएगा, इजंट इट। पर अब ये 2 10 और 8 में से कैसे आया, should I do 8 minus 10 or 10 minus 8? 10 कौन सा टर्म है, पहला टर्म है या सेकंड एक्सप्रेशन है, so 10 is first expression, right, minus 8 is second expression, so it is 1 minus 2। Subtraction के केस में it will be little different, okay, so go with the language, what must be subtracted from this, so from वाला मैंने पहले लिखा है minus x, so x should be subtracted from 1 to get second expression, okay, so I can say x must be subtracted from 10 to get 8, या फिर 2 must be subtracted from 10 to get 8। इनको ध्यान से करना है, ठीक है, इनको ध्यान से लिखना है। तो हमने क्या देखा, 1 माइनस 2, 2 कौन सा है, 1 क्या है, जो गिवन है, गिवन में से जो हमारा आंसर आया है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो अब इसको फॉलो करते हैं। नाउ जस्ट दिस क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट फिगरिंग आउट which one is to be subtracted from what, okay, to get the answer। तो अभी करते हैं, हमने लिखा है 1 minus 2 फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन हियर, तो फिर करते हैं, चलो p स्क्वायर प्लस 2q² प्लस आर स्क्वायर माइनस 4pqr। पहले ब्रैकेट में, पहले एक्सप्रेशन में आई एम नॉट प्लेसिंग ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं है, कुछ नहीं करना है हमें, वी विल जस्ट राइट इट एज इट इज, माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन विच इज 2p² माइनस q² माइनस 3r² प्लस pqr। ठीक है, अब खाली जो हमारा जो काम है वो है, इट इज टू, oh my god, I see some big number। Okay, so we'll just solve it now। I know that it gets little tricky when you have so many expressions, इतने सारे terms हैं, सर दर्द हो जाता है, सर दर्द नहीं रखना है भाई, फोकस करना है, हो जाएगा, one step at a time, don't get scared। सेम थिंग, यू हैव अ माइनस साइन, देखो ब्रैकेट के बाहर ही माइनस साइन है, अंदर के सारे साइंस चेंज होंगे, सो इवन इफ यू डोंट वांट टू डू द मल्टीप्लिकेशन, जस्ट चेंज ऑल द साइंस इनसाइड एंड यू आर डन। सो 2p² is negative positive here, we will make it negative, q² is negative, we'll make it positive, again negative, we'll make it positive, positive will become negative, now we are good to go।
Okay, okay, focus on the question. अभी negative p square. Let's I'll highlight all the p squares. 1, 2. There are only 2 p squares. Now solve the integer part, coefficient part. Negative 1, negative 2 will become negative 3 p square. I hope you know that how I got it. There is nothing in front of p square, so we assume that there is 1. Okay, chalo. Now let's have a look at the next variable. Next variable is q square. So I'll take this q square and I'll take this q square. There are no more q squares there. So, did you see that signs of the coefficients are opposite and they're same? Plus 2 minus 2. They will get cancelled. Done. We don't have to solve it. Next is r square. As you can see, r squares are here, plus r square and plus 3r squares. How many r squares we will get? 4r squares. And then last is negative 4 and negative 1 will make negative 5 p, q, r, and we are done. How are you feeling? Feeling good after solving it? Okay. 3r square minus 4 pqr. 4r square होगा. 3r square क्यों है? देखो ना, यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ इंक टू शो यू. यहाँ पे देखो प्लस 3r स्क्वायर है, यहाँ पर 1r स्क्वायर है ना. टोटल कितने हो गए? 4r स्क्वायर. थोड़ा सा ध्यान से. ओके, डोंट लूज मार्क्स बिकॉज ऑफ दी स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स. ऑलराइट. Okay, so I think this is good enough for now. I want you to practice such questions from your textbook. There are some value based questions also and then chapter end questions also. उनको भी करना है, ठीक है? वो practice करके कुछ questions होंगे तो do let me know and I will discuss them with you. तो चलो, अभी जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है इवेलुएटिंग एक्सप्रेशंस. सो इट इज़ वेरी इजी, समथिंग दैट यू गोइंग टू रियली एंजॉय डूइंग and it's pretty simple. All you have to just do is just put the values and get the answers. All right, तो चलो फिर ये वाला ट्राई करते हैं, ठीक है? ओके, तो इवैल्यूएटिंग, रिमेंबर ये वर्ड्स को ध्यान में देना है, ठीक है? इवैल्यूएटिंग मीन्स, इवैल्यूएटिंग हैज कम फ्रॉम द वर्ड वैल्यू. ओके, फाइंड द वैल्यू. इवैल्यूएट समथिंग मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन. अभी देखो जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे, these questions were of simplification, subtracted. So ये क्या हो रहा है? देखो, you had so many terms and ultimately what you got? One single term, right? So this is simplification where you simplify something complicated. बहुत complicated था, बहुत ज़्यादा complicated था, हमने उसे simple कर दिया. अब यहाँ क्या करना है? तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है. वैल्यू किस में आती है? इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ओके, वेरिएबल्स को हटाना है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू. तो पहला एक्सप्रेशन देखते हैं, 2a माइनस 4b. अब 2a माइनस 4b अब कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, ठीक है? ओके, so the first one, 2a minus 4b. So can I write this as 2a? So it is 22 minus 43. Is it correct? If not, what mistake did I make? I'm sure you must have guessed it. It is multiplication. Remember that we have discussed when there is no operation between a number of variable or between two variables, it means they are being multiplied. So we cannot write it like this. We have to write it as 2 times a minus 4 times b. All we'll do is just substitute the value of a and b. So 2 is positive a minus 4, b is positive 3. Now remember the BODMAS rule. BODMAS rule says that you have to multiply, okay, first. So 2 times
2 BODMAS. Let me just write it for you, just a quick recall. So multiplication and division comes first, then addition subtraction. So 2 twos are 4, and here you will get negative 4 into positive 3 is negative 12. Okay, final answer. Same sign add, different sign subtract. So we will subtract and sign of the bigger absolute value, which is 12. That's the answer. Easy, isn't it? Yes, it is. All you have to do is just pay attention to the sign of the number and solve the operation accordingly. Okay? Now, second question. Values are same. A is equal to 2 and B is equal to 3. So what we will do in this case? Remember, you have to substitute the value of A and B in the expression and solve according to the operation and the rules of the operation. All right. So let's have a look at this question. Let us see how to do this. So first, we will, this step is not necessary, but you can always expand it, write it in multiplication form to understand what you're supposed to do. Okay, so now negative 4. Now A is positive 2 and B is positive 3. So we'll just substitute the values and that's it. Now solve each part. So negative 2 times positive 2. First you will multiply the sign. So negative into positive is negative. 4 times 2 is 8. And then multiply the signs. Okay, sign of negative 3, negative sign of 3 here, and this sign of 3. So negative into positive, again negative, then 3 times 3 is 9. Okay, same sign, we're going to add them, and sign of the bigger number, or both are negative, so negative 17. This is the answer. एक बार देखते हैं दोबारा से क्या किया है हमने. बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है. और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद में नंबर्स की जो साइन है ना बच्चा, उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. मल्टीप्लीकेशन हम लोग ये पार्ट कर रहे हैं पहले. आई जस्ट चेंज द इंक टू शो यू. ये पार्ट हम पहले सॉल्व कर रहे हैं. तो इन दोनों के साइंस क्या है? नेगेटिव इंटू, और इसका है पॉजिटिव, तो नेगेटिव बन गया, ठीक है. अब यहाँ ये जो साइन है ना, इट विल गो विद दिस 3 बच्चा. ये इस साइन के साथ चला जाता है, इस नंबर के साथ में. सो ये बन जाएगा. अच्छा, आपके स्कूल में कैसा होता है? देखो, आप अपने स्कूल का फॉलो कर सकते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं है. तुम मुझसे शेयर करोगे तो मैं फिर तुमको बताती हूँ, ठीक है. अच्छा, मैं इससे करती हूँ. यहाँ भी ओके. अभी मैं अपने से करती हूँ, तुम अपने से करो. बस ये है कि आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है. चलो ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चंस का सेट है. नाउ in this question you have got A, B and C. There are 3 variables, 4 questions, 4 different type of questions, and you have to solve. All right, so let's begin. Try करते हैं.
Okay, we'll solve it one by one. We'll solve one question at a time. So let's begin. Okay, after every question, I'll give you a minute's time to reflect on the previous and move on to the next question. So let's have a look at the first question. So all you have to do is just replace the values. So A is -1 plus B is 2. Since it is positive, you do not need to put a bracket for positive. You can just write it as it is, plus -2 here. Okay. Now, I'll remove the brackets, -1, this is plus 2. Now, there are two signs here. When this situation comes, please multiply them. Plus into minus will become -2 and then just solve them. Now, यहाँ पर you have to apply addition rules. Okay. All addition rules. -1 plus 2 is +1 minus 2. Now, this is +1, this is -2. Same sign are different sign, subtract. So, -1. ओके यहाँ पर तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे बिकॉज ये प्लस है ये भी प्लस है तो पता है कि एडिशन रूल अप्लाई करने हैं तो यहाँ पर अगर ये माइनस साइन नहीं भी आता तो भी चलता कोई भी मेथड यूज करो आंसर सेम होना चाहिए गुड जॉब या इट इज -1 ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ओके All right, let's begin. Question number 2. So we will substitute the values. So it is 2 times -1 plus 2 times b is 2. Now minus 2 times c is -2. Okay, so now we'll solve all the signs first. So 2 into -1 is -2. Now, next part, both are positive, so it will become 4. Now, here, I'll just show you. This is negative, this is negative, this is negative. So, and you're multiplying them, so you'll get a positive 4. Okay. Now, here you have to apply addition rules of integers. Okay. So, -2 plus 4, one by one we are doing. It will be +2 plus 2 plus 4 equal to 6. That's the answer. एनी पार्ट जो मुश्किल लगा वेरी गुड इट इज 6 ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं okay I'm sure you must have started so I'll also begin question number 3rd. So let's begin with substituting the values. So it is -2 times. Now be very careful. B is being given first, so we will substitute that. Plus A is -1. Then minus 3 times. Now C is -2. Now solve one by one. So we'll solve this part first. Carefully check the signs and multiply the signs first. So one is negative, the another is positive. So we'll have negative. 2 2s are 4. Now plus into minus. Remember when there is nothing, we assume that there is 1, okay, before the bracket. So positive into negative will get you a negative number. So we will write it as minus 1 into 1 will give you 1. And then the last part,
Both are negative, as you can see, so it will become positive. 3 2s are 6. Apply addition of integer rules. Okay, so they both are the first two, they both are same sign, so we will add them up. Sign both are negative, so we'll write the negative there. Negative 5 plus 6, you will get positive 1. Okay, all right. So now we'll work on the last part here. Now, let me just write it clearly for you, बच्चे. ये A यहाँ है, ठीक है? B. Giving you a head start so that you can start first. चलो, अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 3 2 by 3 times a. Now a is -1 plus b. b कितना है 2. Now let's solve this part. Remember that when there's nothing in denominator we assume it 1 और numerator को numerator से multiply करते हैं, denominator को denominator से. So this will be -2 over 3. 2 into -1 is -2 and this is 3 plus 2. Now I believe you would remember the fraction addition. How do we add? So we will take the again, well, there are many ways. You can assume it is 1, right? Because there's nothing in denominator. Now we'll make the denominator same. So the denominator here is 3. To make this one, convert this one into 3, we will multiply this by 3. So the same thing we have to do with the numerator also. In math, whatever do with one part, we have to do it with the other part. Denominator ke saath, if you're multiplying with a certain number, so numerator also will be multiplied. Let's solve this. So -2 by 3, it will become 6 by 3. Now how do we do it? When the denominators are same, when we have common denominator, we just write that as it is and then we add the or subtract the numerators. -2 plus 6 will become 4 by 3. Solve it further, it will be 1 by 3, 1 over 3. So that is your answer. So see, all the math concepts are interlinked. ऐसा नहीं होता है कि एक जो है मैथ में अगर हम algebra पढ़ रहे हैं तो we'll not learn the fractions, will not work on fractions or will not do the decimals. It's not like that in mathematics. Any part can be asked anywhere. Okay, now here the sign was you have written the wrong sign. Okay, check the sign. Bacha, check the sign. Why did you get a negative? It should be positive. See, it was a positive here, right? So it will remain positive. And sign of the bigger absolute value, which is 6. So it will come positive. I'll put something in the chat. Okay, this is what I had planned for today. There is this question though. This is the last question for the day. And you can try this question. Let's finish this and then we are done with the part which I saw in your textbook. जो textbook के main concepts से algebra के वो इसके बाद हो जाएंगे. तुम्हारी last exercise है जो textbook की है, तो you can try that exercise yourself. Let me know अगर उसका कोई part पे कोई lesson कोई class लेना है तो वो मुझे बता देना, ठीक है? अभी ये वाला question करते हैं.
Okay, so this question is all about, first you have to solve, simplify, and then you have to evaluate. So this question involves both the concepts that we have learned in this chapter. So which operation are we using in this? So the question is, find the expression for total amount. And how do you get total? Total is sum of numbers, right? So you have to find the sum of expressions. So let's do that. So we will write total amount is equal to add both expressions. You do not need to put any bracket here because we are adding. We know that even if there is a plus sign outside the bracket and you will solve it, then you will still get the same signs of the numbers or the terms which they have. Signs will not change, so you can just directly write the expression without the bracket. Just combine the terms, becomes very easy. 2a square here, and there here it's plus 3a square, so 5a square, then negative b square, positive 5b square. So negative 3 positive 5 is positive 2b square, then plus 6ab, and negative 4 negative 2ab is plus 4ab. Now अब यहाँ पे ये हमारा expression आ गया है. Next part is super easy, but then it requires a lot of calculations also. Okay, so now if a is equal to 100 and b is equal to 150, then 5a square plus 2b square plus 4ab is equal to, how much would that be? Okay, यहाँ पर ध्यान देना है. 5 times a square, that is 100 square, plus 2 times, this is b is 150 square, plus 4 times 100 times 150. All right, so you have to solve very carefully. All right, so 100 square means 100 times 100. Okay, so let me write this in expanded form for you. Some parts you can solve directly if you know how to do it. 150 plus 4 times 100 times 150. I'm changing the ink here. It seems a little too bright. Okay, now how do you multiply? This is a shortcut when you have zeros at the end. So what do we do? Multiply all the numbers which are there in front. So we will solve term by term. So 5 times 1 is 5. 5 times 1 again is 5. So it is 5. How many zeros are there at the end? 2 plus 2, 4 zeros. So we will place 4 zeros here. 1, 2, 3, 4. Okay. Now plus. Abhi, let's solve this expression. So we have got 2, then here 15, and then 15. So we have to multiply these numbers. So 15 times 2 is 30, and 30 times 15, the last 15, how much would that be? So 30 times 50, 15 is 15 threes are 45, and then 1 0 at the end. So 450, and there are 1, 2 zeros, so we will place them at the end. Now similarly, or you can place the zeros first. So 1, 2, 3 zeros, you can place them already. Now what are we left with? 4, 1 and 15, multiply them. 4 times 1 is 4, and 4 times 15 is 60. Now all you have to do is just add them up. Okay, and give me the answer. What did you get? Check please. Did you also get the same numbers? Solve it बच्चा. Solve करो इसे.
Very good. That's the answer. Correct. Good job. Good job, Piku. You're doing very well. Okay. अच्छा मुझे बताओ आधी सेशन हेल्पफुल हेल्प होती है थोड़ा आई एम गोइंग टू एंड अनशेयर दिस इज द लास्ट ओके अभी ये हो गया है तुम्हारा चैप्टर भी आई थिंक